हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि हम इस चैनल में कवर करते हैं ऑलवेज लास्ट टाइम हमने कवर किया था इमिग्रेशन के ऊपर, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट वीज़ा के ऊपर। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू कवर अबाउट सुपर वीज़ा। इसके बारे में मैंने पहले ही बात की है दैट आई विल कवर दिस वीडियो, सो हियर आई एम। बट प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कोलीग्स। इसको सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ चैनल को, दैट रियली हेल्प्स। ओके, सो आज हम सुपर वीज़ा के ऊपर डिटेल में बात करने जा रहे हैं एंड आई वांट टू हैव लाइक 3 वीडियोस ऑन सुपर वीज़ा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड प्रोसेस। सो फर्स्ट वीडियो में आई वुड लाइक टू कवर अबाउट द सुपर वीज़ा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कैसे आप अप्लाई करें, एवरीथिंग as much as possible in detail. Second वीडियो में मैं I'll show you the documents required. So कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनविटेशन लेटर हो गया, लेटर ऑफ सपोर्ट हो गया, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स हो गया एंड पर्पस ऑफ ट्रैवल हो गया। ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी फाइल को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। इट्स रियली वेरी वेरी स्ट्रांग। मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है और मेरे कई फ्रेंड्स ने अप्लाई किया हुआ है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट टू वॉच दैट वीडियो. That this will be in the second video. The third video that I would like to cover is about step by step आप कैसे अपना प्रोफाइल बनाएं एंड कैसे इसको एक्चुअली में अप्लाई करें. सो दीज 3 videos I would like to create and make sure जब आप अप्लाई करते हैं you get a perfect किसी आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ आप परफेक्ट सारे डॉक्यूमेंट के साथ सब कुछ अप्लाई करें, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग रहने से आपका जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है. सो प्लीज़ मेक श्योर. तो हाउ टू स्टार्ट, लेट्स क्विकली कवर दिस वीडियो. तो एंड प्लीज़ subscribe the channel. Okay, like the channel. Like the video and subscribe the channel, please. Thank you so much. So before we start, so super visa, how will you come to this page? Okay, you need to go to canada.ca. I'll show you here. Canada.ca पे जाना है आपको. You have to go on immigration and citizenship. Okay, यहाँ से apply करना है and make sure you can apply for super visa from outside Canada. Okay, not inside, because आउटसाइड अप्लाई करके एंड देन यू हैव टू कम इन राइट एज अ सुपर वीज़ा. सो यहाँ पे जैसे आप जाओगे फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे आपको जाना है विजिट में. ओके, विजिट एंड देन इट विल गिव यू एन ऑप्शन इनवाइट योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. ओके, सो इधर जाके इट विल give you on the super visa page. So this is how where you have to go, and then you have to click on apply for super visa. This is not for you because this is for basically extend your visa, visitor record visa, visitor visa के लिए है. But now the super visa good thing is last month Canadian government had opened the super visa for 5 years. पहले ये 2 years का होता था, now 5 years का visa है. So you are here on the landing page, right? Super visa page पे आप आ गए हो. Up, if it is little bit tough for you, you can go on the Google, type in super visa, and you will get the first link, first or second, you'll get that link. So once we are here on the super visa, so I would like to guide you on this. This is very very important page. So on this page you see the fees is $100. Okay, and processing time, it depends on the country. So we'll check all that in detail. We'll check about the financial requirements. We'll check about what is really required for you and your parents to apply for super visa, the documents required, all that in detail. Okay, so super visa क्या है? Basically when you apply for a normal visitor visa, your parents or grandparents can come up to 6 months and then they have to go back. अगर उनको 6 months के बाद वापस जाना है एंड इफ दे वांट टू एक्सटेंड, देन देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर. वो एक्सटेंड हो सकता है. डोंट थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, बट एवरी टाइम दे कम फॉर 6 months, डोंट एक्सटेंड एवरी टाइम. ओके, डोंट क्रिएट दैट record in the Canadian government. Okay, but the best thing is super visa के लिए वो 5 years आ सकते हैं. So if they come for 6 months, 8 months, 12 months, 3 years, 4 years, now they can stay up to 5 years and then they have to go back and come back again. So it's a long time, right? And it's also an alternative of parent and grandparent PR, क्योंकि PR में जैसे commitment होती है, you have to take care of the parents' insurance and everything, their health. For 20 years super visa don't have that, but super visa में you should have a health and a medical policy for your parents. That's important. So let's start. So you see here super visa lets your parents visit children for up to 5 years. Make sure जो भी super visa apply करते हैं, your children should be PR or a citizen of Canada.
Okay, so let's start here. So ये दिस इज टॉकिंग अबाउट जस्ट अ लिटिल बिट चेंजेस, क्या क्या चेंज हुए हैं 4 जुलाई से लेकर 2022. नाउ आपके पेरेंट्स 5 years तक रह सकते हैं. Okay, stay up to 5 years, which we just covered. Now let's see here. So let's see who can apply. Okay, so this is an important part. Who can apply? So to be eligible for Supervisa, you must be a parent of a PR or citizenship. जैसे मैंने बोला, your child should be a citizen or a PR. Okay, and then have a signed letter from your child or grandparent who invites you. अब इसके अंदर लेटर के अंदर a promise of financial support, a list of number of people of कितने लोग हैं इसमें घर में, and a copy of person's कैनेडियन सिटीजनशिप और PR कार्ड का डॉक्यूमेंट. तो जैसे कि ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है और मैंने अभी जस्ट कवर किया, ये सब डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका फॉर्मेट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट यू नो दिस वीडियो इज कमिंग. सो नेक्स्ट थिंग इज द पेरेंट शुड हैव मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉम द कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी. सो किसी भी कंपनी से, कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी लाइक RBC, स्कॉशिया बैंक, किसी भी कंपनी से, कॉर्पोरेटर्स, उनसे इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा. जहाँ से भी आपको सबसे इकोनॉमिकल इंश्योरेंस मिले, सबसे कम पैसे ले रहे हो आप उससे कराइए, बट कोटेशन नहीं चलेगा. मेक श्योर यू शुड हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास, एंड दिस शुड बी वैलिड फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री. ओके, the insurance coverage should be at least 100,000 of emergency coverage. So ये होना चाहिए. It says quotes aren't acceptable, so it should be paid in full. So you should pay that in full. Okay, कई कंपनीज क्या करती हैं, वो आपको एक बना देती हैं कि you will have a 1 year of visa from the date of entry when they come, which doesn't have a tentative date. Okay, you can check with the insurance company and they can let you know. Okay, another thing is you must also apply for a Supervisa from outside Canada. Okay, that we have covered. You have your visa printed outside. So visa जो है आपका वो outside Canada से लगेगा, not from inside the Canada. Okay, next thing is a parent should be allowed to enter Canada. कोई ऐसा penalty ना हो या पहले restriction ना हो उनके ऊपर that they cannot come to Canada. Okay, this is normally no for all the people कि parents कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उनको आने में, but just in case. Next is उनको immigration का medical का exam लेना पड़ेगा. So this is important. So what happens is in this, उनको medical का examination लेना पड़ेगा. Now this is not through their own physician, but this is through their if you see this, कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऑथराइज सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनको देना पड़ेगा. व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर विजिटर सुपर वीजा, सो देन देयर इज अ प्रोसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल सपोर्ट. दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. ओके, सो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, सो आई विल शो यू दिस डॉक्यूमेंट इन द सेकंड वीडियो. ओके, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसको दिखाने से आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है. इट्स जस्ट नॉट स्ट्रांग, इट्स वेरी स्ट्रांग. ओके, जितना ज़्यादा आप दिखा सकते हो इसमें, दैट्स बेटर फॉर योर पेरेंट्स. सो दिस टॉक्स अबाउट दिस इज अ लो इनकम कैटेगरी. ओके, सो कट ऑफ, दैट मीन्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर 2 persons, your income should be minimum gross is 33,140. Okay, this is before the taxes. Okay, so this is what you should have if you have a size of family is 2 persons. Okay, if you have 4 persons, it should be minimum 50,000. Okay, just make sure this is very important part, very important aspect, because if your income is not meeting, then the file can be rejected. So please make sure your income is at least qualifying, at least a minimum. Suppose you're 4 persons, so minimum 49,000. If you have 70,000, 60,000 gross income of your family. Okay, family means if you are there and your wife is there, right, then it's your family income. So it should be your family income. If minimum is 60, 70,000, 80,000, that will make your case stronger. Okay, now let's go to back to this document. Apart from that, इसके अंदर आपको क्या लगाना है, नोटिस ऑफ असेसमेंट लगाना है, T4 अपना, which will show you how much income you have earned. So
mostly we recommend at least 2 years of notice of assessment होना चाहिए आपका. If it is more than 2 years, 3 years, it's fine, but at least आपको 2 years हो at least. But this one says notice of assessment or T4 for the most recent tax year, right? But if it is for 2 years, it's better. कम डॉक्यूमेंट देने से अच्छा है कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो उनके पास, उनको पता लगे कि इनकी स्टेबल इनकम रही है लास्ट ईयर से 2 years से, so that is good for you. Okay, if it is not, then you can put the most recent one. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट स्टेटमेंट, EI के जो आपके बेनिफिट्स स्टेटमेंट होता है आपका. एम्प्लॉयमेंट लेटर स्टेटिंग सैलरी, एक लेटर हो इसमें स्टेटिंग आपकी सैलरी हो, कितनी सैलरी है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो, लिटिल बिट ऑफ डेट ऑफ हायरिंग हो, कब आप हायर हुए थे, पे स्टब्स हो आपकी, एंड बैंक स्टेटमेंट हो. सो दिस आई विल अगेन सेड, एज आई सेड, आई विल कवर दिस थिंग इन डिटेल इन द प्रूफ ऑफ मीन्स. इसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में जैसे लगा रखा है. आई वॉन्ट टू जस्ट अपडेट इट एंड देन शो इट टू यू सो दैट इट्स more accurate for you as per the current timelines. So that will show you कि इसमें क्या क्या आपको basically exactly क्या क्या आपको wording use. I want to make sure you use the accurate wording. ठीक है, Canadian officials आपकी फाइल को रिजेक्ट ना कर पाए. Okay, I just want to make sure. So next thing is other considers conditions. We consider, अब ये लिखा है यहाँ पे we consider, right? This you might think this is optional, right? But this is not optional. Okay, you must be a genuine visitor to Canada. All right, so इसमें ये लोग क्या देखते हैं, your ties to your home country, your purpose of travel, your family and finances. ये कहाँ से मिलेगा आपको? I'll give you all this, ठीक है, in the second video, because मेरे पास ये purpose of travel, letter of support सब बना हुआ है, and I want to share all that with you, purpose of travel as well. Okay, so this is not optional, friends. दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एप्लीकेशन का. सो ये मैं इसको नेक्स्ट सेकंड वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ आपको. ठीक है, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आपको सेकंड वीडियो की सारी डिटेल्स एंड थर्ड वीडियो की आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे आपको. ठीक है, एंड इन द फ्यूचर एज वेल. नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू अप्लाई. एज आई सेड, दिस इज अ वेरी big process. I want to show you this in the third video, how to apply, and this which is coming soon after the second one. So how to apply, you need this letter of invitation, you need the necessary income, you need to have a proof of payment of medical insurance of at least 100,000 emergency coverage. Okay, so ये आपको दिखाना पड़ेगा, जो मैंने ये हमने already discuss किया है, but good to know. So once you have all these things ready, and there are some documents which I'll show you, you have to create a IRCC portal में अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक कोड लेना पड़ेगा before you apply, and then you're good to go. Okay, so यहाँ पे आप देखो, complete the online form and upload your document. This is what we will cover as well. So if I just go here in brief, list of documents based on your situation. So अगर हम यहाँ देखेंगे, so why are you visiting Canada, यहाँ पे आपको डिटेल डालनी पड़ेगी before it tells you. ठीक है, so it is not for a family visit, it is a visit as a tourist. Okay, so do you qualify as a fully vaccinated? Your parents should be vaccinated. Okay, if you say yes, and then ये आपको documents आ गए. Okay, so कौन से आपको documents चाहिए यहाँ पे. So this is a very important part to see on the list of documents. So ये मैं but आपका ये मैं पूरा डिटेल में कवर करूँगा when I create a third video on the Supervisa. Now before you apply, you need to have an account, right? So you need to click on this, and then you need to apply, create an account. If you already have an account, log in and आप शुरू हो जाओ बनाना फाइल. But that's what the file I'm going to show you. So यहाँ पे आपको क्या करना है, what you would like to do. So apply for a visitor visa for myself or someone else. So I'm just doing someone else. Apply. Do you already have an application in process? No. And यहाँ से आपको basically शुरू करना है कोड बनाना. So here you will enter your email address, and once you confirm your email address, it will give you a invitation code. कोड की बहुत ज़रूरत है. कोड इज़ वेरी वेरी important, because with that code you can create an account. Okay, I'll show you that as well, how to do that. So going back on here, so after you apply, so once you apply,
देन यू नीड टू probably you can check the processing time now. we have इसके लिए आप चेक कर सकते हो. सो यहाँ से क्या है कि आपका that once again, यहाँ से आप कितना प्रोसेसिंग टाइम है चेक कर सकते हो. सो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा आई एम अप्लाइंग फॉर अ टेम्पररी रेजिडेंस, आई एम अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा एज अ सुपर वीज़ा, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. where do your parents live? So for example I say India, right? So India का processing time है 124 days. Okay, इतने में आपको when you apply you will get the visa in about 124 days. Same I check Pakistan, 310 days. So India से ज़्यादा fast process है. So India से it's 124 days. So you need to select your country and then you can it will tell you. I've seen कि ये जल्दी हो जाता है प्रोसेस थोड़ा सा, बट दिस इज लाइक द टाइम लाइन दैट दे गिव डिपेंडिंग ऑन द करंट सिनेरियो. अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो है इसमें व्हेन यू अप्लाई यू कैन चेक द प्रोसेसिंग टाइम. आप इसमें मेडिकल एग्ज़ाम दोगे, यू विल गेट अ पुलिस सर्टिफिकेट. सो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी. एंड यू कैन यूज़ अराइव कैन टू प्रोवाइड द मैंडेटरी ट्रैवल इंफॉर्मेशन for the COVID-19. I think इन्होंने अभी ये बंद कर दिया है, but the things can change, so just keep visiting this page of after you apply. Okay, so this is very very important. Now इसमें एक चीज़ और मैं जो कवर करना चाहूँगा, that is this thing is very important कि जब आप अप्लाई करते हो सुपर वीज़ा के लिए, apart from this application fees which is about $100 Canadian dollars, your parents may need to give biometrics. This is on the about the document page. So now you may in certain circumstances you may not need to give biometrics, so but you can find out here. So if I find out if I need to give biometrics, अगर मैं नीचे जाता हूँ and then I'll see कि क्या मुझे biometrics देना होगा. So basically it says here you have to select these two options if you have given in the past or if you haven't, right? So if you didn't give the biometrics in the past, this is for your parents, okay, not for you. So parents ने अगर आपके या grandparents ने नहीं दिया है कभी, you need to select the country. So कौन सी country? For example India here, and they are applying for super visa, right? Are you in Canada? No. Then it says you need to give your biometrics. So this is very important. Okay, this is a separate requirement that have been started. I think it started in a couple of years back, 3-4 years back if I'm not wrong. But if you are in Canada, you do not need to give biometrics. Okay, तो ये चीज़ जो है important है. But super visa का requirement है कि you need to be outside Canada. This is also for visitor or super visa. So visitor में भी this is more applicable for visitor, but not for super visa. But you need to give your biometrics exam as well. Okay, so these are some of the important factors. अब हम इसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे. As I said, in my next video I'll show you detail of these documents as well as step by step कि आप कैसे अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई करो, each step at a time. Okay, please do like, subscribe the channel. Thank you for watching. I hope you like the video. Please like और share करें वीडियो को and subscribe the channel. Thank you and have a nice day. Keep watching for the next video. Thank you.